बहुत बहुत दिनों के बाद दोस्तों हमने टेस्ट क्रिकेट को लेकर एक शो किया था बिकॉज फ्रैंकली इट्स बीन अ व्हाइल सिंस देयर वाज एन एंगेजिंग टेस्ट मैच। हम आज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर टेस्ट के एज अ रिव्यू नहीं करेंगे हम, लेकिन हम बात करेंगे नेथन लायन के बारे में, जो उन्होंने 500 टेस्ट विकेट का लैंडमार्क क्रॉस किया। ही नाउ सिट्स at sixth in Australia's all-time test wickets column, and for a man who started his career at 2000 in just 2011 to get past 500, it's amazing for 35-year-old Lyon. लेकिन हम आज बात करेंगे कि लायन के बाद, एंड ऑफ कोर्स रविचंद्रन अश्विन जरूर वहां पहुंचेंगे बिकॉज अश्विन इज स्टिल गॉट 2 to maybe 3 years left in his test career and he only needs 11 wickets. He's on 489 wickets. अश्विन को 11 विकेट चाहिए to join that rather elite group of bowlers with 500 test wickets. But beyond Lyon, beyond Ashwin, it's a case of we've been waiting for the last several months कि कब Lyon 500 तक पहुंचेंगे, कब अश्विन 500 तक पहुंचेंगे। इत्तेफाक की बात नहीं है कि दोनों ऑफ स्पिनर्स हैं, फिंगर स्पिनर्स हैं, but you just go down the list of bowlers, active bowlers, and there's Trent Bolt. I think Trent Bolt is the next one. Yes, Trent Bolt. Sorry, Tim Southee. Tim Southee has 374 test wickets, but he's 35. He's probably in his last year of test cricket. Then you look down at who's next. You have Mitchell Starc. Mitchell Starc is what, 32, 33. He's got 338. Then you have Trent Bolt, 317. But these are fast bowlers in their mid 30s, early to mid 30s. तो जाहिर सी बात ये है कि वो कभी भी 500 तक नहीं पहुंचेंगे। और आज जो मैं आप लोग से सवाल पूछना चाहता हूं वो ये है कि गिवन द नंबर ऑफ T20 लीग्स, गिवन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल T20s एंड वन डे क्रिकेट, it's very very tough for any bowler to even think about getting, forget 500, even to think about getting to 400. और मैं उन bowlers के बारे में बात कर रहा हूं जो शायद आज के दिन 2023 में at the onset of 2024 वो 50-40 के आसपास टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनके पास तकरीबन 200 शायद 250 टेस्ट विकेट हो। बहुत बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं कहता हूं नामुमकिन है, impossible given the terrain, the way that cricket is going, the workload on the all format player. I don't see any bowler. लाइन अभी पहुंचे हैं, अश्विन जरूर पहुंचेंगे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के बाद, ये मैं कह रहा हूं आपसे इस लाइव स्ट्रीम पर, मुझे लगता नहीं है कि कभी भी कोई बॉलर 500 टेस्ट विकेट पहुंचेगा। 400 विकेट भी मेरे हिसाब से बहुत बहुत मुश्किल है, just because of the volume of cricket being played, the financial opportunities for bowlers to go off and play T20 leagues, as well as for certain teams, the lack of test cricket. 4-5 टीमें हैं जो शायद साल में 12 से 15 टेस्ट मैच खेले, और जितना भी आपके पास स्किल हो, जितना भी आपके पास अनुभव हो, जितना भी आपके अंदर भूख हो टेस्ट विकेट के लिए, टेस्ट विकेट्स लेने के लिए, मेरे हिसाब से नामुमकिन है कि कभी हम दोबारा किसी भी बॉलर को देखेंगे जो 500 टेस्ट विकेट खेल पाए। Because if it has to happen, a bowler has to have been playing for several years. He cannot be playing T20Is and one days. There's a reason कि जेम्स एंडरसन, जिनके पास 690 विकेट हैं, तकरीबन 42 साल के हैं, that's old by elite sportsmen, that's very old by fast bowling terms, but there's a reason why James Anderson is still an active test bowler with 690 wickets. It's because he's been around for a long time, yes, but he doesn't play T20s, he doesn't play one days, and he's kept himself very very fit. और जिस बॉलर ने 2003 में अपना डेब्यू किया, यानी कि 20 साल बाद, अगर आप फिर भी एक टेस्ट प्लेयर हो, आपके पास 690 विकेट हो, तो आप एक रेयर once in a generation type bowler हो। I'm looking at someone like a Kagiso Rabada, fantastic bowler, still young, still got a lot of miles left in him, but I don't think even he'll get to 400. तो 500 मेरे हिसाब से is going to remain a mythical, untouchable, even unthinkable landmark. So hats off to Nathan Lyon for getting there, for just sticking to what he knows so well. Ashwin, my favorite current off spinner going around. I have no doubt कि अश्विन भी 500 तक पहुंचेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, आज अगर कोई बॉलर, forget a bowler just making his debut, वो तो नामुमकिन है क्योंकि आपके पास इतने टेस्ट मैचेस भी नहीं है, पर जो बॉलर जिनके पास 200 है, 250 है, मुझे लगता नहीं है कि उनके पास इतना क्रिकेट होगा, शायद उनकी चाह भी इतना नहीं होगी जितना कि लायन के पास है या जितना अश्विन के पास है। तो दुख है मुझे ये कहते हुए कि आई थिंक we've now seen the second last bowler to ever get to 500 test wickets, and whenever the great Ravi Chandran Ashwin does get there, आप मेरे बात का ध्यान रखिए, बल्कि आप मुझसे लिख के लीजिए
कि Ravichandran Ashwin will be the last bowler ever to get to 500 test wickets. So while Ashwin and Lyon are around, let's celebrate them because these are two bowlers who've done something I believe we will never ever see again. क्या कहते हो? मानते हो मेरी बात? अगर नहीं तो कमेंट करिए. मानते भी हो तो भी कमेंट करिए. We've seen Vipul Soni. Yes, Ashwin will achieve. बिल्कुल मैंने वही कहा था. Ashwin is the next one. Shreyans is saying, what will we do with Ashwin's record if he doesn't perform in knockouts? But Ashwin doesn't play knockouts. You do know that he did not play the last WTC final, and in the final before that, when two spinners were not even needed, Ashwin bowled very, very well. So I'm not quite sure how you're connecting Ashwin's 489 test wickets with knockout matches, given that in test cricket, in the history of test cricket, we've only ever seen two knockouts, and that was the 2021 WTC final, where in a very wet scenario on a very damp pitch, Ashwin did bowl very well. And the second final this summer, 6 months ago, Ashwin was not even given a chance. So I'm not quite sure, Shreyans, how you're comparing Ashwin in knockout matches when the man's only played one knockout match. ICC has made such a rule that batsman gets more favor than bowler, so it's very difficult to reach 500 wickets. हाँ दोनों बात सही है लेकिन बात कंडीशंस की नहीं है बात है कि जो जो चैलेंजेस जो खतरा है टेस्ट क्रिकेट को और टेस्ट बॉलर्स को इतने सारे T20 आई से इतने T20 लीग से कौन है वो बॉलर जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेगा मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं है और जैसे कि मैंने कहा था स्टार्क और स्टार्क के पास 335 336 हैं सऊदी के पास 370 के पास है पर ये लोग 34 35 में है इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है तो अगर ऐसा कोई बॉलर है जैसे कि स्टार्क हो या सऊदी हो या बोल्ट तो मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई बॉलर नहीं है जो कभी कभी 500 के आसपास जाएगा Ravi Shankar, I'm really sorry. I do not want to talk about the IPL. We're talking about Test cricket, my favorite format. It's been a long time since we've talked about Test cricket. So I would request you to please stick to the topic of the video, Ravi Shankar, and not ask me IPL because I really could not care about the IPL. I don't follow any team. I don't really care about what happens. I would like to talk about Test cricket. It's been a while, right? Pranav is saying, hey, hello, Pranav. I think that's a new name, not a regular viewer. अगर आप नए हो Pranav तो आपको स्वागत है Shashank, I didn't know you changed the name. It's good to be back. Yes, I did. Welcome back, Shashank. I changed the name based on a lot of feedback, a lot of suggestions from lovely viewers like yourself. So I did change the name. There were a lot of other ones. There were some longer ones, some shorter ones. Some didn't make sense. But 3, 4 lovely regular viewers said, just keep it simple. Get your name in there. Cricket with Jamie. So that's the one I went to. छोड़िए मेरी बात छोड़िए आईपीएल की बात हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में आप में से कितने व्यूअर्स ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच देखा आप में से कितने व्यूअर्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के इंतजार कर रहे हैं हम बहुत बात कर चुके हैं इस पूरे साल वनडेज को T20 को लेकर आईपीएल को लेकर छोड़ो वाइड बॉल को बहुत वाइड बॉल आगे हैं लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट एंड हाउ गुड someone like a Nathan Lyon is, how good someone like an Ashwin is. So share your views. Let's have today's discussion on Test cricket. Dhruv is saying, hi Jamie, with more T20s, even 300, 350 Test wickets is considered a great feat. That's true. We would never see 450, 400, 500 bowlers. Exactly. Look, I'm just going through that list again. Active players, okay? Active players. Forget Murli, who got 800. Forget Anderson. Koi baat nahi. Look at the active players. We have Tim Saudi, 374. He's played 96 test matches. I think he will get to 100 because he's got enough gas in the tank, but he's not going to go much beyond, 400. Mitchell Starc said that I will quit everything before I quit test cricket. But again, he's around 33. He's got 338 test wickets. He's on 83 test matches. No doubt he'll also go to 100. But again, how far will he get? 380, 390? Not much beyond that. And then Trent Bolt is 317. I don't think he will play test cricket again. उसके बाद कौन है हमारे पास? रबाडा 280 टेस्ट मैच. अगर ये 350 विकेट तक पहुंचेंगे तो I'll be surprised. Jadeja 275. He might get to 300, but 500 मेरे हिसाब से it's never happening again. Shiran saying when Ashwin doesn't play final, what's the glorification? Well, I mean, 500 wickets, there's very few players. So you have to glorify it, right? The man is India's most successful bowler when it comes to playing matches. Finger spinner. So just because he didn't play one final, you're telling me you're gonna discount his 489 wickets?
Keep in mind that knockout matches only came in the last 4 years. Ashwin had been playing cricket for 8 to 9 years before knockouts came around. So again, Shreyansh, I'm not quite getting what your point is. When he's not played one final, how does that discount his records? The guy's taken 489 wickets. You're telling me that should be discounted? Not quite sure, my friend. पाकिस्तान कैन नेवर बीट ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ एक एशियन टीम हरा चुकी और वो इंडिया है 2 बार इंडिया वहां पे सीरीज जीत चुकी है हर्षित कह रहे सर आपसे सबसे पहले तो ये साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस किस हिसाब से रखें ये डर के मारे 20 रन रखे हैं 2 टेस्ट ताकि तुक्का लग जाए हो सके ऐसा हो बट बेसिकली साउथ अफ्रीकन बोर्ड चाहती है कि ज्यादा व्हाइट बॉल मैचेस हो उनके हिसाब से रेवेन्यू ज्यादा ज्यादा आएगा व्हाइट बॉल मैचेस में इसीलिए उन्होंने केवल 2 टेस्ट मैच खेले जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ना समझ है Ravi Shankar has got the idea. Finally, my friend, you've understood that the question should be related to the topic of the day. So, who's the greatest ever test bowler in test cricket? James Anderson, R Ashwin, Mitchell Starc, Nathan Lyon, Tim Southey, and Dale Steyn. No, for me, it's a name which is not even here. It's Shane Warne. Shane Warne was the greatest bowler to ever play test cricket. So the options you're giving me, they're probably only the bowlers you've seen, and that's fine. But you're also giving me active cricketers. None of these guys, to my mind. Shane Warne, and I've had the pleasure of watching him live. Shane Warne is the greatest bowler in my mind. The greatest fast bowler, Wasim Akram. There was no other left-arm pitcher like him. So unfortunately, the two options which I've given you, they're not on your list. But that's okay. You've probably not seen Akram and Warne bowl. Koi baat nahi. Atul Power, good morning. Ashwin will break the barrier 500. Bilkul, Ashwin, if he plays these 2 test matches in South Africa, he might get there in these 2 test matches. But definitely, logically, वो 5 टेस्ट मैच जो अश्विन खेलेंगे मेरे हिसाब से अश्विन 5 टेस्ट मैच में कम अज कम 30 विकेट तो लेंगे तो आप सोचिए अगर वो अगले 2 टेस्ट मैच है हालांकि बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि अश्विन का रिकॉर्ड काफी खराब है साउथ अफ्रीका में नॉट अ कंट्री वेयर ऑफ स्पिनर्स रियली डू वेल बट लेट्स इमेजिन अश्विन गेट्स 11 in 2 test matches 500 then another 30 against England what a fantastic series that's going to be he could by the time he ends his career he could get to Anil Kumble's mark and I would love to see Ashwin get to Anil Kumble's mark. I'm fine, Nihar. How are you? I read one stat yesterday in fourth innings. Babar Azam has worst average among all top batsmen. I don't know the stats, but if you read it, it's probably true. Upul 024 Kishle Kumar, क्या नाम है भाई कह रहे हैं should have been 3 tests at least in SA but in SA only Sri Lanka's won. Bilkul, I would love to see three test matches and yes, the only Asian team to win a test series in South Africa is Sri Lanka. Kusal Janit Pereira. Dhruv कह रहे हैं considering how Kuldeep is bowling these days, I think he can be our Warne in test. Again, very, very unfair to compare someone like him to the best leg spinner in history. But जब तक अश्विन है जब तक जडेजा है तो कुलदीप के चांसेस नहीं है जब अगले 2-2.5 साल के अंदर अश्विन और जडेजा रिटायर होंगे और कुलदीप मेरे ख्याल से 31-32 के होंगे तब वो फुल टाइम बॉलर रहेंगे लेकिन तब तक मुश्किल है उनके लिए Shreyans कह रहे हैं if Ashwin is such a good bowler then why doesn't he get to play? Exactly my point. I've been saying this. Ravi Shastri and Virat Kohli had a problem with Ravi Chandran Ashwin. They did not want to play him in overseas test matches. He plays everywhere, but when the Indian team goes to England for the last 2 test series, this is why they lost the WTC final. And this time, because they didn't play Ashwin, I don't know, Shreyans, how much test cricket you watch, but Rahul Dravid and Rohit Sharma, in one of the strangest comments, said that these conditions were not conducive to Ashwin. Did Australia say that these conditions were not conducive to Nathan Lyon? No. They played Nathan Lyon. The guy got 8 wickets in the WTC final. So Ashwin should never have sat out 6 consecutive test matches in England. But unfortunately, Shastri and Kohli had a problem with him. And now we've seen that when it comes to England conditions, Rohit Sharma and Rahul Dravid have a problem. And this is why India do not win titles because you've got a bowler who has 489 test wickets, but you have a problem with him. Read the lovely interview that he gave to the Express and the Hindu after the WTC final. It is, we said this back in the day, we said this 2 years ago, I said this year on many shows, on many TV channels. This Indian team does not understand the value of Ashwin. Just like the Australian team understands the value of Nathan Lyon,
Virat Kohli, Ravi Shastri had some problem. Who knows what it is? I've heard lots of rumors, but I'm not going to talk about them here. And why Rahul Dravid, who was such a fantastic test player, why he and Rohit Sharma did not play Nathan Lyon. That's one reason why India lost the WTC final. It's just beyond cricketing logic how they did not play him in this final. Kamal Sagar keh rahe hain, hey, jammy. It's not jammy, but okay, never mind. No quality spinners these days. This is complete commercialization of cricket. Um, Perhaps too much T20. Yes, Bishan Singh Bedi ने मुझसे कहा था एक बार ये बात. God rest his soul. Shane Warne, Shane Warne was the best spinner. I don't know how many of you viewers had the fortune of watching Shane Warne. I watched him live several times. Virat Kohli, he would have got Virat Kohli. He would have ended Virat Kohli's career a long time ago. Not just Virat Kohli, he would have ended many players. That man was a genius, and it took two geniuses to counter him. One, the great Brian Lara, and two, the great Sachin Tendulkar. नहीं तो कोई भी बैट्समैन ने शेन वॉर्न को कंसिस्टेंटली ऐसा डोमिनेट नहीं किया. But strangely enough, Shane Warne कभी इंडिया में चले नहीं. That just says how good our batsmen were. Memes world is saying who should play against SA, Ashwin or Shardul? Ashwin. If you give me two options, there's a way that they both can play. But अगर आप मुझे केवल दो ऑप्शन दे रहे हो, मैं कहूंगा अश्विन. For you, who's the best Indian test bowler ever? Anil Kumble. Sir, any idea of MCG pitch? Normally a little dry. Spinners do get some assistance there, but I don't think we're going to see a very different MCG pitch. So वहां पे spin चलेगा. Even Jadeja cannot beyond go. Yeah, बिल्कुल. Like I said, he's not going to go beyond 350. Ravi Shankar कह रहे, I am talking about this generation of Test cricket bowlers, not about previous. Okay, then I'm saying Anderson. Too many batters. किसको किसको खिलाएंगे भाई मुश्किल है लेकिन आपको वो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा बिकॉज बैलेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर एक ऐसा देश है साउथ अफ्रीका जहां पे अब तक कोई भी इंडियन टीम टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है और मैं इस बार समझता हूं कि इस बार भी टीम नहीं जीत पाएगी एक तो दो टेस्ट मैच में रिजल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप पहला टेस्ट मैच हार गए तो फिर आप सीरीज तो जीत नहीं पाओगे और अगर आप पहला पहला मैच जीत गए तो बहुत बहुत मुश्किल है लगातार दो टेस्ट मैच जीतना सो आई एम जस्ट शॉक्ड हाउ इट्स जस्ट अ टू मैच सीरीज Shaurya कह रहे हैं records are meant to be broken. New players will emerge. New records will be formed. Sachin's 50 centuries. Yes, it does. But one days, India has played far more one days than Sachin Tendulkar's generation of batsmen used to play. And we're talking about Test cricket, a format which many people believe is not viable. So there's no chance. I mean, I can say this with every bit of conviction. While 50, I mean, Virat Kohli said this in 2013. He told a common friend of mine कि मैं आराम से पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा और आप सोचिए अगर विराट कोहली तीन साल तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते तो he would be sitting on about 6500 right now. So Sachin's 50 hundreds, yes, at one point they were mythical, but the kind of amazing player that Virat Kohli is, the drive he has, the fitness he has, and the number of one-day matches played in this generation, I had no doubt कि विराट कोहली वहां पहुंचेंगे. But 500 टेस्ट विकेट्स लिख के लो मुझसे भाई नहीं होने वाला कभी. राहुल गुप्ता इज बैक. व्हाट्स अप राहुल. ट्रेविस हेड ने WTC और वर्ल्ड कप अकेले अपने दम पे जिताए. अश्विन भी होता तब भी हारते. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अश्विन के होते वो जरूर जीत जाते बट आप ये देखिए इंडिया ने एक बहुत ही अनुभवी स्पिनर को जिनके पास 480 तकरीबन विकेट्स थे उनको नहीं खिलाया और आपके स्पिन बॉलिंग बहुत वीक था. क्या ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि ओवल कंडीशंस स्पिन बॉलिंग के लायक नहीं है नेथन लायन के लायक नहीं है. नेथन को खिलाया और उसी ओवल पिच पर जहां पे बहुत स्पिन था नेथन लायन ने 8 विकेट लिए. तो इफ यू प्लेड अश्विन लिख के ले लो मुझसे he would have done more than Jadeja. I'm not saying he would have won the match but definitely he would have given a fight. So again this Indian team just like Kohli and Virat and Shastri have some problem with Ashwin when it comes to England. Otherwise, the guys played in Australia, he's played in South Africa, but somehow England में they don't understand what to do with Ashwin. जो कि अफसोस की बात है. Shaheen looked clueless. Two debutants took 12 wickets. Yes, Shaheen has not been the same ever since that Asia Cup match when Rohit and Shubman Gill took him apart. Rohan is saying Ashwin is one of the smartest Indian players. Absolutely. His variations, unmatched. His improved batting. Yes, he is a very class all-rounder. Vipul Soni keh rahe hain Starc. Like I said, Starc's got 338 wickets. He's 33.
he might end up with, I don't know, four 400 wickets, not much beyond 400, not much more. 500 impossible. शार्दुल की जगह चार प्रॉपर फास्ट बॉलर से उतारनी चाहिए टीम इंडिया, ठीक है, मोस्ट लाइकली वही होगा। नंबर 7 पर अश्विन के साथ चार प्रॉपर बैट्समैन काफी है, अगर बिट्स एंड पीसेस पर गए दोनों टेस्ट मैच हारेंगे। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। आई थिंक अश्विन को जरूर दोनों मैच में खिलाना चाहिए। Shaurya saying England is playing 17 tests. Wow, look, this I'm talking about. Certain teams play 3 times as much as other teams like Sri Lanka and West Indies, Bangladesh. Warner head Smith Khwaja would have struggled against Ashwin. Ashwin is a big name, so he's a mental block. Absolutely. Like I said, it's a major reason why India did not win or did not push Australia was because they left out a bowler with 480 odd wickets. We talk, I mean, I'm not the only one. Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, बहुत legendary लोग इस बात को लेकर बात कर चुके हैं। इस नाचीज की राय क्या है? Abhinav is saying nowadays less ODIs and tests are played in more T20Is. True, but one days are still playing. Will anyone score 90 centuries? If anyone does, it's the closest guy, Virat Kohli. Ravi Shankar is saying Sachin, then Dulkar up, and Brian Lara, according to you, played very good against Shane Warne. But why other batters can't play well? Because, I mean, look, there are there's a reason why Don Bradman is revered like that. There's a reason why Shane Warne and Sachin Tendulkar are revered. उनके आसपास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं. So Shane Warne probably bowl to 100 batsmen, but when only two of them could play him, that's because we're talking about two of the most unreal cricketers since Don Bradman. That's why Brian Lara is Brian Lara and Sachin is Sachin. There were times when, of course, Jack Callis played Shane Warne decently, Navjot Sidhu played him decently, VVS Lakshman played him very, very well, but consistently across their careers, no batsman other than Brian Lara and Sachin Tendulkar played Shane Warne. But we're not talking about any ordinary batsman. We're talking about extraordinary batsmen. So that's why. Improved batting of Jadeja and Test is the main reason of Ashwin inclusion in Sena countries. It's not just Sena. Ashwin still plays in Australia. He still plays in South Africa. But somehow when it comes to England, maybe they think it's always going to be green and seaming, but it doesn't make sense because this oval pitch for the WTC final was perfect for Ashwin. That's why Australia played Nathan Lyon. I'm telling you, we talk about why the Australians, why they win the WTC final, why they won the World Cup final. Of course, skill, fielding, planning, flana dimkana. But इन ऑस्ट्रेलियन के पास कान के बीच ये है जो हमारे इंडियन प्लेयर्स के पास है नहीं और शायद कभी होगा नहीं. इसीलिए पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलियन टीम्स तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं. 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीती. इस साल 6 महीने पहले ये टेस्ट चैंपियनशिप जीते और 1 महीने पहले, बल्कि एग्जैक्टली ए मंथ अगो, दे वन द वर्ल्ड कप. स्किल, हमारे पास क्या स्किल नहीं है भाई साहब? आप इंडिया के गांव गांव जाइए, गली गली जाइए, इतना टैलेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा इस पूरा विश्व में. हमारे पास विराट कोहली है जिनके पास 50 वनडे सेंचुरीज है. हमारे पास रोहित शर्मा है जिनके पास 3 ODI डबल सेंचुरीज. हमारे पास बुमराह है, द फाइनेस्ट न्यू बॉल बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट. लेकिन जो आपको चाहिए कान के बीच में, वो इंडिया के पास नहीं है. तभी ये टीम 10 साल से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है. और सबसे रिसेंट एग्जांपल, 1 महीने पहले अहमदाबाद में गलत सोच से वो लोग गए थे, पिच को नहीं पढ़ पाए. रोहित ने कहा था कि हम भी बैटिंग पहले करना चाहते थे, गलत डिसीजन. वो छोड़िए, टेस्ट क्रिकेट, आज का टॉपिक है टेस्ट क्रिकेट. ओवल में इंडिया ने फील्डिंग लिया. आपने फील्डिंग लिया ओवल पे जहां पे बारिश की एक बूंद नहीं आई. आपने कहा था शायद बारिश आएगी. भाई साहब, एक बूंद बारिश नहीं पड़ी उस 5 दिन के टेस्ट मैच में. बादल भी नहीं आए थे. ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया ने कहा चलो. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन पे तकरीबन 400 रन बनाए. तो आप हारे हो अपनी सोच से. आपने कंडीशंस को एक बार फिर से, अफसोस की बात है, मिसरीड किया और आपने अपने सबसे अनुभवी बॉलर को बाहर किया. क्या ऑस्ट्रेलिया ने यह किया? क्या उनको लगा था कि यार ओहो शायद बादल आएंगे? ओहो नहीं, उनको मालूम था कि बादल नहीं आएंगे. उनको मालूम था कि बारिश नहीं होने वाली है. उनको मालूम था कि ओवल में टर्न है, थोड़ा ड्रिफ्ट होता है. उन्होंने लायन को खिलाया और लायन ने 8 विकेट लिए. और हमने क्या किया? हमारे लायन के साथ हमने उनको बाहर बिठाया. तो भैया आप कैसे वर्ल्ड कप जीतोगे?
आप कैसे WTC फाइनल जीतोगे? आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप सोच में मार खा गए सर। साहिबजादा फरहान एंड कामरान गुलाम और पाकिस्तान, भाई साहिबजादा फरहान कौन है भाई? सॉरी, आई डोंट नो दीज नेम्स। और पाकिस्तान बेस्ट बैटर्स, बट बाय नॉट पिकिंग देम दे आर डॉम्ड, doomed. Okay, अच्छा, doomed. Babar is struggling big time. Saw Shakil look more compact. I'm guessing Saibzada and Kamran must be under 19 players. Sorry, मैं इनको जानता नहीं हूँ, but अब मैं आपकी बात मानता हूँ. Yes, Babar has been struggling for a long time. Saad Shakil did look much better, but again, he's a middle order player, and hopefully Babar, for the bigger picture of quality cricket, he gets back to form. Is Pujara's Test cricket over? Yes, it is, Nihal. It is. शौर्य कह रहे Cummins, Stark, Hazelwood, Lyon versus McGrath, Gillespie, Lee, Warne. For me, it's Warne, McGrath, Cummins, Stark, Lyon, Lee, Hazelwood, Gillespie. Yeah, that's a pretty accurate one. Correct. Atul is saying my grandfather used to say that Sir Viv was a man ahead of his time. My father said the same thing too. 1983 Tour of India ODI match in Jamshedpur, he scored 149.99 balls. Bilkul. I mean, Sachin Tendulkar was drawn to cricket by Viv Richards. The reason why Viv Richards walks into a room, and believe me, I've been in rooms when he's walked in. भैया एक से एक बंदा वो खड़ा हो जाके वो सलाम ठोकता है. Very few players like that. I mean, Viv Richards was the god of his generation. So, absolutely. And I saw him play once in 1987, but I was very young. प्रशांत कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लैंड भी 10 साल से टेस्ट नहीं जीता. हाँ, काफी टाइम हो गया है. ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इंडिया जीती है 2 बार. राहुल सिंह, इंडिया नॉकआउट मैचेस में प्रेशर में आ जाती है. जो परफॉर्मेंस लीग मैच में देते हैं वैसे ही नॉकआउट में खेलना चाहिए. सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ सेइंग थिंग्स, बट मेरा सवाल ये कि इसका जवाब क्यों है? हम हर बार बात करते हैं किलर पंच नहीं है, मेंटालिटी क्यों नहीं है. भाई क्यों नहीं है? वो कहां से आएगा? क्या हम अगले 10 साल में, क्या हम 10 साल बाद बोलेंगे अरे यार फिर से इंटेंट नहीं था, मेंटल ब्लॉक था? आई होप दिस चेंजेस. इंडिया हैज टू मच टैलेंट नॉट टू बी विनिंग टाइटल्स फॉर 10 years. Shreyans saying England's success in Test had a big contribution of their spinners. Exactly. Someone like a Graham Swan. What a brilliant bowler. No one talks about Graham Swan's role in England becoming a top side. Strange, no? We need intelligent spinners in middle overs. We have two of the most intelligent spinners going around. There is no better spin bowling combo in Test cricket right now, and maybe in the history of Indian cricket, जहां पे दो bowler की बात हो, than Ashwin and Jadeja. But unfortunately, overseas, the two rarely get a chance to play. If they'd played Ashwin and Jadeja at the Oval, which was a spinning track, maybe India would have won that final. But again, Indian teams lack this. SS98, welcome back, my friend. Good to see you. Krishna or Mukesh to replace Shami? Krishna, for sure. I would love to see him bowl. I think he's got good test cricket ahead of him. राजीव कुमार कह रहे हैं पाकिस्तान 10 ईयर्स पीछे चल रहा है क्रिकेट में. बिल्कुल. उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत पीछे है. इनका पूरा ओवरऑल फंक्शनिंग है. इनका जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो इकलौती टीम के बोर्ड है जो अभी तक पेट्रन सिस्टम पे चलता है. इनका जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास चैंपियनशिप है, टूर्नामेंट है, कैद आजम ट्रॉफी, वो बोर्ड्स के बेसिस पे बना है, नॉट के स्टेट वाइज या रीजन वाइज. इट्स बैंक्स, इट्स एयरलाइंस, इट्स ऑल दीज थिंग्स. सो अलग ही दुनिया में है. और जैसे कि आपने कहा था, लग रहा है यहां से इंडिया में बैठकर कि उनका ओवरऑल क्रिकेट ही 10 साल चल रहा है पीछे. और आजकल बहुत लोग कहते हैं कि वो टीम फिर भी T20 में तगड़ी है. तो मैं कहूंगा इनका बुरा वक्त भी आने वाला है T20 क्रिकेट में. चलिए, बहुत बहुत हमने बातें करी आधे घंटे के लिए टेस्ट को लेकर. दोबारा कहूंगा आपसे कि इस नाचीज की राय में कभी भी 500 टेस्ट विकेट्स कोई बॉलर नहीं कर पाएगा. Ashwin, of course, will get there because he's on 489. But beyond Ashwin, there will never be a bowler to get to 500. Jeba, your performance on Archie's. Thank you, my friend. Thank you. You didn't answer which attack is better. What's the second option? Acha, you're talking about McGrath. You're asking me कि McGrath, Lee, Gillespie, Warne. Any day. For me, yes. जय भाई, साउथ अफ्रीका ने 2008 के बाद 3 सीरीज जीती और 1 हारी है, वो भी एक वर्स्ट पिच पे. साउथ अफ्रीका ने 2008 के बाद 3 सीरीज जीती है. कहां? ऑस्ट्रेलिया में. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जीती है. मैं कह रहा हूं एशियन टीम.
एशियन टीम्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक एशियन टीम है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब वहां जाके कुछ ना कुछ कर पाएंगे। एशियन टीम, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये कभी नहीं। इंडिया इज द ओनली एशियन टीम जो दो बार, एक बार तो कोई नहीं कर पाया, इन्होंने दो बार किया है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, शाहिद फरहान और कामरान गुलाम और देयर बेस्ट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 7 years। फिर तो भाई इतने अच्छे नहीं है, नहीं तो वो जरूर टीम में आते अब तक। नेथन लायन इसलिए अश्विन से बड़े बोल रहे बिकॉज नो सब कॉन्टिनेंट के बॉलर, वो सब क्या सब कॉर्नर के बॉलर नहीं है, वो सेना में बॉलिंग करते हैं, नहीं तो 550 और लाइन इंडिया में भी चलते हैं। मैं मानता हूं कि अश्विन कहीं ना कहीं शायद न्यूजीलैंड के पिचेस पर नहीं चले हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं हैरानी की बात है कि उनको लगातार 6 टेस्ट मैच इंग्लैंड में, इनको 6 टेस्ट मैच के लिए बाहर किया गया। अगर उनको वो 6 टेस्ट मैच मिलते तो उनके पास भी अभी तक 550 विकेट होते। डू यू थिंक इंग्लैंड हैव अ चांस इन इंडिया? um I think they'll compete, Shreyansh. Look, I'm going to say this again. बहुत बार कह चुका हूं. Don't expect baseball to work. Baseball only works on flat conditions or in conditions जहां पे बैटिंग थोड़ा आसान है। बेसबॉल क्या 2 साल तक चला है? जब भी पिच में कुछ उल्टा सुल्टा हुआ है, जब में पिच में स्विंग था, सीम था, बेसबॉल फुस हो चुका है। नाउ we're expecting 5 रैंक टर्नर्स पे बेसबॉल नहीं चलेगा, लेकिन कहां इंग्लैंड का चांस है रैंक टर्नर्स पे? Like we saw recently when Australia came, rank turners can also backfire on India. So if England come with 3 spinners, they pick some 5 spinners. England, just like Lyon and Todd Murphy and Matthew Kuhneman, just like three, one legend of the modern game, one debutant, and one player also, two debutants in Murphy and Kuhneman. Just like those three combined to bowl India out in 2 days, England could do it. But I would still say with Ashwin and Jadeja and Akshar Patel behind and the chance of rank turners, very tough for England to win the series. They might win 1 or 2 test matches, but the series overall, it's still India's. Surya Vikram Singh saying, what's the future of Virat Kohli? I've been asked this question 1,000 times and I'll say it again. Done in T20 eyes, won't play T20 eyes again. 2 more years of test cricket, 2.5 years, and 3 years of one-day cricket. Babar's struggle was real, says Sandeep. His desperate attempt to go off strike before he got out was unbelievable, which is strange for a batsman who, before this, in 2 tours, has actually done well in Australia. But I just go back to that Asia Cup match in Colombo against India. The Pakistan team has never looked like a quality side since India ने उनके धागे खोले। राहुल गुप्ता कह रहे हैं क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप में? भाई नहीं, हम आज टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं 50 शो कर चुका हूं T20 को लेकर, आज माफी चाहूंगा, आज नहीं भाई, आज नो T20। What's your opinion on the new South African young batsman number 4 who made a quick fire 20 yesterday? ठीक है, लेकिन quick fire 20s aren't and 40s aren't going to do anything for you, no? Where the quality players? I think South Africa is also facing a talent drain. Pawan Suresh, India chances in SA Test series. Personally, very less from my experience. Will we see same pitches as 2021 when England came? I don't think it'll be that sharply turning. I don't think we'll see a day-night test. But yes, if India go the rank turner way, 3 दिन में काफी मैचेस खत्म होंगे इंडिया के पक्ष में। Rabada 280 wickets, he's 28. Yes, but it's not going to happen. I don't think Rabada is going to get past 350, 375 because his body is breaking down and he's going to have to keep on choosing matches. So Rabada maximum 375. ये अश्विन ऑज बैटर्स के खिलाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। जय भाई, चैनल का नाम क्यों चेंज किया? शायद आप नहीं थे उस लाइव स्ट्रीम पर। बहुत लोगों ने कहा था कि आपका चैनल का नाम हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लंबा है, कोई तुक नहीं, हम लोग कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसी लाइव पे मैंने कहा आप लोग बताइए, बहुत व्यूअर्स ने ऑप्शंस दिए और जो मैक्सिमम वोट्स आए थे वो इस नाम पे आए। तो आप लोग की राय को लेकर मैंने चैनल का नेम चेंज किया। 2 हफ्ते हो गए, आप शायद नहीं थे उस लाइव स्ट्रीम पर। Anyways, my friends, I will see you tomorrow. Tomorrow we've got the IPL auction. I'll be sitting for about 3 hours live on on CNN News 18 in the studio. और फिर शाम को मैं आपके साथ जुड़ूंगा इस चैनल पर और फिर परसों हम कल का वनडे मैच भी रिव्यू करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, आखिरी कमेंट आया है निमेश पांडे से। इस कमेंट लेकर हम शो पे विराम लगाएंगे।
कह रहे हैं there are so many players like Umar Akmal, Amar Shehzad and Unmukt Chand who were compared to Virat Kohli. But I think Babar Azam is different. Look, Unmukt Chand never played for India. दूर की बात है. He could not even play first class cricket. Ahmed Shehzad, हाँ वो थे, but वो भी नहीं चल पाए. और उमर अकमल भाई, उमर अकमल जितना टैलेंटेड युवा खिलाड़ी पाकिस्तान से आया, मैंने ऐसे बहुत कम टैलेंट देखे पाकिस्तान से, लेकिन बंदे का भी दिमाग कहीं और था. सो इसलिए भाई, इसीलिए विराट कोहली है. वो इस जनरेशन, इस दौर के सबसे बढ़िया तीन फॉर्मेट बैट्समैन है. उनके मुकाबले में कोई नहीं है. बहुत आ चुके हैं, लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मेट को कंबाइन करें, यानी कि टेस्ट, वनडे और T20, मेरे हिसाब से विराट कोहली के मुकाबले में कोई नहीं है. हाँ, बाबर आजम बेशक, उमर अकमल, अहमद शहजाद, और आपने क्यों उन्मुक्त चंद का नाम जोड़ा जब वो कभी देश के लिए नहीं खेले, ये मेरे समझ से बाहर है निमेश. लेकिन हाँ, बाबर आजम इन तीनों से बहुत बहुत आगे हैं, लेकिन वो विराट कोहली के आसपास नहीं है और ना ही कभी आएंगे. चलिए, 35 मिनट पूरे, बंदे को इजाजत दीजिए. आई विल सी यू टुमारो. हैव अ ग्रेट मंडे. लव यू ऑल. टेक केयर. जय हिंद.